हेलो स्टूडेंट्स। हम कौन देखुथिले सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हीट कैपेसिटी चलथिला पहले पार्ट 2 रे हम देखिथिले कौन डिफरेंट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हीट कैपेसिटी। फास्ट देखिथिले कौन फास्ट देखिथिले हीट कैपेसिटी ऑफ liquid heat capacity of a liquid is heat capacity of a liquid is higher than heat capacity of a solid. Heat capacity of solid. ये फास्ट प्रॉपर्टी वन में देखी थी नंबर वन प्रॉपर्टी इतला नंबर वन प्रॉपर्टी द हीट कैपेसिटी रीजन देखी कौन होता ना ये कौन होता ट्रांसलेशनल मोशन वाइब्रेशनल मोशन इन केस ऑफ लिक्विड देयर आर टू डिग्री ऑफ फ्रीडम in case of liquid, but in case of solid there is only one degree of freedom, that is vibrational degree of freedom. So heat capacity of a liquid is higher than heat capacity of a solid. Next देखिए कौन हमें Cp means heat capacity Cp greater than Cv. हमारे heat capacity at constant pressure here heat capacity at constant pressure is greater than heat capacity at constant volume. Heat capacity at constant volume. एक में देखिथिले कौन रीजन कौन व्हाई द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज हायर देन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रीजन कौन व्हाट इज द रीजन कौन थिला फर्स्ट रीजन कौन थिला फ्रॉम द रिलेशन Cp is equal to Cv plus R. Cp is equal to Cv plus R. Here Cp is larger value than Cv because Cv सहित plus R जोड़ी हेले या सब समान होता है तामाने Cp निश्चित एठारु अधिका so Cp greater than Cv the first reason हमें देखिथिले सेकंड रीजन कौन आ कोन रीजन नहीं पारबो thermodynamically reason कौन this is all thermodynamic reason but what is the actual reason so see why Cp is greater than or higher than Cv काहे अधिक हबो देखिए हमें काहे अधिक हबो फर्स्ट रीजन कहले from this relation you get that Cp is greater than Cv. Second relation कौन देखो consider is a container. The gas particle is considered in this container. This is a piston. The container having, or you can say cylinder, a cylinder having a piston contains some gas molecules. When heat is applied here, यदि हम apply करिवा ध्यान दे heat is applied at constant pressure at pressure is constant करदा constant pressure यदि heat apply करिवा at constant pressure then expansion takes place. यदि heat apply करछन्ती at constant pressure को constant रखुछन्ती then volume कौन बडी change हो काहे की because after applying heat the gas try to expand
So this is changes to this. The initial, then this changes to this due to expansion. So some external work is done at constant pressure due to expansion of gas expansion ଯୋଗୁ ଏଠି କିଛି work done ହବ, ଏଠି କିଛି work done ହବ. But if constant volume variables, see here, if ସେଇ କଣ୍ଟେନର ହେଇଯିବା, ସେଇ ସିଲିଣ୍ଡର ନେଇଯିବା, ଏଠି ପିଷ୍ଟନ ଲାଗିଛି, ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ହିଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, applying heat Q is applied, but this is fixed. ଆମର ଏଠି constant volume. At a constant V, what happens? Sorry, at constant V, then what happens? When heat is applied, there is no expansion. कौन से expansion एटी हबनी? There is no volume change. There is no volume change. So work done is zero. There is no work done. There is no work done. At constant pressure, the heat capacity is depends is कौन करे? Work done पर depend करे. Work done भी हुए. एटी one when gas ଆମେ apply କରୁଛନ୍ତି volume change ହେବ, କିଛି external work done ହେବ. But ଏଠି କୌଣସି work done ହବନି. So to do this work, এই work done ହେବା ଯୋଗୁଁ, here work done ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ. ଏଠି କୌଣସି ଏଠି କମ ହିଟ୍ ଦେଲେ, ଏଠି ହିଟ୍ ଦେଲେ ଜଲ୍ଦି ଏନର୍ଜି ବଢିଯିବ, ହିଟ୍ ବଢିଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହେଇଯିବ. Because there is no work, there is କୌଣସି work done, PV work ଏଠି done ହଉନି. But ଯଦି work done ହଉଛି, ପୁଣି ଯଦି apply କଲେ ପୁଣି expand ହେଲା, ତାମାନେ due to work done, more heat is required here at a constant pressure. At a constant pressure, the amount of heat is required is more. So heat capacity at constant pressure is more than heat capacity constant volume. Understood? So ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଦେଖ ପିଲେ, ପୁଣି ଦେଖିବା, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ରିପିଟ୍ କରୁଛି ଦେଖ ଏଠି, ଯଦି at constant volume ରେ, sorry, at constant pressure ରେ ଯଦି ଆମେ ଏଠି heat apply କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ, after applying heat, then expansion of gas takes place. Gas expand ହେଇଯାଏ. The piston movement করে. That some work is done here. Some work is done. So again you increase the heat, then again expand, again work is done. So due to work is done here, more and more amount of heat is required. More and more amount of heat is required here. ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଠି heat ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ. So heat capacity at constant pressure is more than heat capacity at constant volume, because there is no work done, because this is fixed, there is no expansion, volume is not changed, volume change हुएनी, so there is no work done, so the heat capacity at a constant volume is less than heat capacity at constant pressure. तामाने Cp is greater than Cv. लिखिपारिबा, एठी लिखिपारिबा हम सेकंड रीजन नंबर 1 हला, ये नंबर 2 हला, एटा नंबर 2 लिखिपारिबा. कोन लिखिबा एठी देखो, देखो मो संगे कोन लिखिबा एठी, this is also given in your Puri Sharma Pathania. Puri Sharma Pathania, Puri Sharma Pathania physical chemistry book देखियो, ସେଥିରେ ବି आपको एक्सप्लेन କରିଛି same region. So ଦେଖ କଣ लिखियो ताहले, Cp, why Cp क्वेश्चन आस परिबो, why Cp, why Cp is greater than Cv, क्वेश्चन आस परिबो. First reason कौन लिखिबो ना, from this relation Cp is equal to C plus R, Cp is greater than Cv.
सेकंड रीजन कौन? सेकंड रीजन कौन? रीजन नंबर 2 रीजन कौन? रीजन 2 कौन? देखो when a gas when a gas when a gas is heated at is heated at is heated at constant pressure at constant pressure there will be there will there will be increase in volume. There will be increase in volume. Increase in volume. ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ କଣ this is called a piston piston ଲାଗିଛି छोटे container piston ଲାଗିଛି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି Q ଇଏ କଣ ହେଇଯିବ ଏଠିକି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ବୁଝିଛୁ ତାମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହବ ତାମାନେ ଭଲ୍ୟୁମ ବଢିଯିବ ଇନସାଇଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ ଯାଇଥିଲା ଭଲ୍ୟୁମ ବଢିଯିବ so volume changes increase the volume so gas expand so କଣ ହବ so gas expand so gas expands so gas expand and also some due to gas expand and some work is done some work is done this is the reason the work done jogu some extra heat is required work is done some extra heat is applied to gas some extra heat is applied when a gas is heated at constant pressure pressure is constant करछंती there will increase the volume so gas expand and some work is done so some extra heat is needed is needed to do work but in case of at constant volume there is no work so Cp is greater than Cv so Cp is greater than Cv अब लिखी दियो प्लीज ना बुझिबा अब लिखी दियो देन आगो बुझिबा ताको लेख देन पढ़ पुरुषोत्तम पठाण भाई पढ़ आगो डाउट रहबनी एठी बुझी सारछ पुरुषोत्तम पठाण बुक पढ़ देखे बढ़िया से बुझ परिबो किछि असुविधा हबा କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ଆରାମ ସେ ବୁଝିପାରିବ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି ଦେଖିଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା property number 3 of heat capacity ର property 3 କଣ ହେଇ ପାରିବ this property is very important exam रे property न ଆସିପାରେ exam ରେ न ଲେଖି ପାରେ ଲେଖ properties but ଏ property ବିଷୟରେ question ପକେଇ ଦବ property ଭିତରୁ question ଆସିପାରିବ in internal exam ରେ ବି property ରୁ question ଆସିବ third property internal exam ରେ ବି property ରୁ question ଆସି ପାରେ why ଲେଖିଥିଲି question ଲେଖି ଦିଅ why Cp is greater than Cv କାହିଁକି Cp Cv ଠାରୁ ବଡ why ରିଜିନ ଯୋଉଟା ଲେଖି ପାରିବ ଗୋଟେ ହେଲା Cp is equal to Cv plus R Cp is equal to Cv plus R one reason second reason କଣ ଯେହେତୁ at constant pressure ରେ external work is done ହଉଛି ଯେହେତୁ work done ହଉଛି so more heat is required so more heat is required so heat capacity is more
but at a constant volume, there is no work is done, so no extra heat is required. So Cp greater than Cv. Third property. Third property. Heat capacity. Heat capacity is infinite. बहुत important. Heat capacity is infinite. जोड़ा important कहूची सब पेपर रे आसी पारे इंटरनल रे भी आसी परिबो. Heat capacity is infinite. केते बेले? In case of in case of phase transformation, ये बहुत important. In case of phase transformation, in case of phase transformation, phase transformation बुझुथिबो कोन phase transformation solid ରୁ liquid हेजिबा बा liquid ରୁ solid हेजिबा बा solid ରୁ gas हेजिबा. Phase transfer कहला कोन heat capacity is infinite. माने C is equal to infinite. C is equal to infinite. केते बेले? In case of phase transformation. In case of a phase transformation. माने solid ରୁ liquid होथो. But temperature and pressure is not change. Temperature और pressure छाड़ दियो बोले temperature रो कोन चेंज होनथिबो. फेज ट्रांसफर होतिबो सॉलिड रो लिक्विड होतिबो बट टेम्परेचर रो कोनोसी चेंज होनथिबो. तामा जे हम बुझिबा देखो बढ़िया एग्जांपल देखियो हम देखो हीट कैपेसिटी केते बेले इनफाइनाइट हबो. केते बेले हबो हेड हम आइस को गरम करिया ध्यान दिला आइस को हीट अप्लाई करिवा आइस सॉलिड इज कन्वर्ट टू water liquid water reaction. टेम्परेचर कोन टेम्परेचर 0 डिग्री T इक्वल टू T1 केते 0 डिग्री ये लिक्विड को this is equilibrium reaction मन रखो T2 also 0 डिग्री. देखो ये केते बेले हेबे देखो जेते बेले कोन सी कंटेनर रे all are happening in closed vessel. हमने वर्तमान पढ़ुछन थर्मोडायनामिक्स all are in closed vessel closed system. हम पढ़ुछन जे में कोन क्लोज सिस्टम में सब काम होची ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम में हम पढ़ुछन हम सिस्टम पढ़िथिले क्लोज ओपन सिस्टम आगो हम ओपन सिस्टम पढ़िबा कोन सी गोटे क्लोज सिस्टम हम होचन जदी आइस को गरम बा या को तुम देखिथो जनरल कि बाहर गरम करो वाटर रे जे आइस को गरम करा जाउछि सेते बेले टेम्परेचर बढ़े काहे की बढ़े जहा भी हीट अप्लाई होला ये आइस रे थिबा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भांगीबार लागि होला. ध्यान दे आते बोलो जेते आइस को हीट दिया हुए when applied heat to ice गोटे बरफ को जब हम हीट करिबा at that time temperature is not changed. ice temperature केते थिला initially T1 equal to 0 degree. icy water हेला पर भी T2 केते अछि से 0 डिग्री. here तुम देखिथिबो टेस्ट करिबे घर देखिबो जेते बेले छोट बेले पढिथिले कोन इन स्कूल क्लास पढिथिले कोन जेते बेले आइस को गरम करूच गोटे थर्मोमीटर पकई चेक करिवो थर्मोमीटर 0 थिला किछि समय पर भी से 0 डिग्री ही रहउची. इनिशियल 0 डिग्री थिला आइस लिक्विड हेला पर भी कहउची 0 डिग्री रहउची. काहे की जो हीट दिया गला that heat is used to break the bond of ice रे थिबा solid मध्ये जो bond the force of attraction को भांगी बारे लागि जाए मैटर को चेंज करे लागि जाए फेज ट्रांसफॉर्मेशन करिबार लागि जाए फेज ट्रांसफॉर्मेशन
जेहेतु फेज ट्रांसफॉर्मेशन करिवारे लागि जाए फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड सो टेम्परेचर इज नॉट चेंज टेम्परेचर इज नॉट चेंज टेम्परेचर चेंज होनी C is equal to dq by dt dt कौन t2 minus t1 so C is equal to dq by t2 minus t1 T1 जहा थिला T1 T2 भी से अछि ता माने dt की थबो 0 टेम्परेचर इज नॉट चेंज इफ टेम्परेचर इज नॉट चेंज तो dt केते 0 ता माने dt कोन होई जिवो कि C is equal to dq by dt केते हे गला 0 dq by 0 समथिंग by 0 is equal to केते ना infinite so heat capacity is infinite in case of phase transformation in case of phase transformation लिखी दो these are three important properties of heat capacity these are three important properties of heat capacity these are three important properties of heat capacity ଆମେ କଣ ପଢିଲେ ଏଠି ଦେଖିଦିଅ ପୁଣି ଦେଖିଦିଅ ଆମେ କଣ ପଢିଦେଲେ properties of heat capacity ଆମେ କଣ ପଢିଦେଲେ properties of heat capacity केतरा प्रॉपर्टी पढ़ले तीनटा प्रॉपर्टी पढ़ले केतरा पढ़ले तीनटा इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी हम पढ़िदेले फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन थिला हम कौन पढ़िदेले एठी फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ हीट कैपेसिटी कौन पढ़िदेला हम एठी प्रॉपर्टीज ऑफ हीट कैपेसिटी नंबर 1 कौन थिला heat capacity of a liquid heat capacity of a liquid is higher than heat capacity of solid heat capacity of solid first property second कौन पढ़ देले heat capacity at constant pressure Cp greater than Cv काहे जानले या रीजन जानले एथुरु क्वेश्चन आस परिया पेपर रे आसी परिबो नंबर 3 heat capacity is equal to infinite केते बेले in case of phase transformation okay this is three important properties जहा कि हम आज डिस्कस करले जहा कि हम आज पढ़िले ओके अब जिबा चलो जिबा एबे जहा पढ़िबा बहुत इंपोर्टेंट काहे कि इंपोर्टेंट पेपर रे याकू नहीं बहुत प्रॉब्लम आसी थाए पेपर रे आकू नहीं आकू मन रखी पार नहांती केते गुडे जिंस अछि हमर थर्मोडायनामिक रिलेटेड इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन स्पॉन्टेनिटी हम पढ़ी जेबा केते गुडे जिंस थर्मोडायनामिक रे कोन कोन अछि ये बहुत इंपोर्टेंट
mainly important for very important for IIT JAM जो माने जाम पढ़िया चाहूँ IIT JAM MSc एंट्रांस IIT JAM हो दिल्ली यूनिवर्सिटी डी हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सी हो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो आम ओडिशा MSc एंट्रांस हो आज हम जो पढ़िया टॉपिक वेरी इंपोर्टेंट IIT JAM तो पक्का से क्वेश्चन श्योर IIT JAM रे आज जहाँ पढ़िबा हेतिर क्वेश्चन श्योर आसे समस्त एंट्रांस पाई याको पले भलसे नोट कर रखा बहुत काम आसे ये बहुत इंपोर्टेंट थर्मोडायनामिक्स पाई यार इंपोर्टेंट कोन देखिबा एठी देखु हम जानि जो डिफरेंट मैक्सवेल इक्वेशन जो टॉपिक मु ना देइनी मु कहले आगो को जहा पढ़िबा हमें एबे जहा एबे डिस्कस करिबा एबे जहा मु हेडिंग देबी जहा को हम पढ़िबा से बहुत इंपोर्टेंट फॉर आईआईटी एग्जाम यूसीयू बीएचयू एमएससी बनारस यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सेटा ताहले ताकू जाने पूर्वरु हम जाने कोन ताकू हम काहे पढ़िबा फर्स्ट लिखि कोन पढ़िया हम पढ़िया कोन ना बॉर्न स्क्वायर BORN Born scientist name square Born square देखो ये नाम मैक्स बॉर्न साइंटिस्ट मैक्स बॉर्न हम पढ़ी थे एटॉमिक स्ट्रक्चर देखि जो मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन साई देखि जो साई स्क्वायर रिलेशनशिप सेम मैक्स बॉर्न बॉर्न स्क्वायर नोट स्क्वायर बढ़िया से गोटी स्क्वायर गोटे स्क्वायर पढ़ुछन हम रेक्टेंगल स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल स्क्वायर ए गोटी स्क्वायर इज very important कहा पाई to find out Maxwell equation Born square is not given in paper रे पछाने what is Born square पेपर आसीबनी but Born square रा एप्लीकेशन very important कौन एप्लीकेशन परिबो Born square एप्लीकेशन यार एप्लीकेशन कोन ही परिबो एप्लीकेशन फास्ट बुझो तब लिखिया फास्ट बुझो देन लिखिबा देखो फास्ट बुझो देन आगो लिखिबा फास्ट बुझिया एप्लीकेशन ऑफ Born square first application number 1 Maxwell to find Maxwell equation to find Maxwell equation Maxwell equation को किन बाहर करिया Maxwell equation तुम जानते पिले कोन अछि लिखितबो dg equal to पढितबो कोन रिलेशन आसीबो dg equal to कोन आसीबो dg equal कोन आसीबो du equal to कोन आसीबो dh कोन आसीबो ए जो रिलेशन हम केमति मन रखिबा एका समय रे ई जो बॉर्न स्क्वायर द्वारा मैक्सवेल रो समस्त इक्वेशन हमें इजीली मन रखिदबा ये बहुत इंपोर्टेंट फर्स्ट एप्लीकेशन हला कोन नंबर 1 टू फाइंड मैक्सवेल इक्वेशंस नंबर 2 लिखे पड़े देखो नंबर 2 माउथरे बुझेई पुनी हम लिखिबा पुनी देखोटी कौन बॉर्न स्क्वायर एप्लीकेशन अछि बॉर्न स्क्वायर रो कौन एप्लीकेशन बॉर्न स्क्वायर रो कौन एप्लीकेशन देखो बॉर्न स्क्वायर रो एप्लीकेशन बॉर्न स्क्वायर यारो एप्लीकेशन कौन नंबर 1 टू फाइंड different Maxwell equations to find Maxwell equations number 1 number 2 relate the partial derivatives आगु पढ़ले जाको बुझबे पिले बुझ पाइबनी खाली देखो कौन बुझेठी relate the partial derivatives of
thermodynamic variables, thermodynamic thermodynamic variables relate the partial derivatives of କାହାର partial derivative thermodynamic variables thermodynamic କଣ କଣ P BT mainly PVT ସେ କଣ entropy P କଣ pressure B କଣ volume T ହେଲା temperature ଏଇ ଯୋଉ thermodynamic variable ଆସିଲା ଏଇ variable ର partial derivative କରିଲା ପରେ ତମାନେ କହିଲେ ds by dp or dp by dt ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ partial derivative କରିଦେଲା ପରେ ସେ partial derivative ମଧ୍ୟରେ କଣ ରିଲେସନ কি କହିବା ଆମକୁ bond square help first la maxwell equation बाहर कर help करे second relate the partial derivatives of thermodynamic variables relate the partial derivatives of thermodynamic variables number 3 spontaneity of system spontaneity पूरा आइडिया दबो किए bond square number 3 याको लिखुची number 3 लिखिबा tells about spontaneity tells about spontaneity of system number 3 number 4 exact value बहुत important all are important exact value of कार exact value of s p ର exact value v ର exact value t ର exact value s ର exact value कौन हबो s कौन entropy p ର pressure ର exact value कौन हबो volume ର exact value कौन हबो temperature ର exact value कौन हबो a bond square and its application पढ़िबा in next part so आज एतिकी next part हम देखिबा यार bond square कौन यार application कौन